ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बी रेडी फॉर दैट। आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है, बट कोई नहीं, सम टेक्निकल इश्यूज आर देयर और फर्दर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। एटलीस्ट हाफ एन आवर आपका, वी आर लेट, हाफ एन आवर, आधे घंटे तक हम लोग लेट हैं लगभग, बट एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो आपकी क्लास चलेगी। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। तो वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals. Understanding quadrilaterals. The topic is understanding quadrilaterals. Today's topic is understanding quadrilaterals. Quadrilaterals. तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमें जो पढ़ना है वो क्या है? डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं, हाउ वी कैन फाइंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहले उन सारे टॉपिक्स को मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम वन बाय वन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे और कॉन्सेप्ट को साथ में भी समझते चलेंगे। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल टॉपिक में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, उन सभी चीज़ों के रेगुलर टाइप ऑफ पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी लाइव हैं तो एक बार वॉइस के लिए, एवरीथिंग के लिए आप सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट। उसी के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज, सर जी आवाज़ नहीं आ रही है। 7:30, बट नाउ अभी तो आवाज़ आ रही है। बट अभी तो सब कुछ क्लियर है। आई थिंक अभी सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। वॉइस इज ऑल्सो क्लियर, इज ऑल्सो एवरीथिंग। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और ये बहुत शॉर्ट वीडियो आज की रहेगी, ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम आपका जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।
आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ व्हाट इज, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स के जो पॉलीगन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसके नेम्स क्या हैं, एंड मिनिमम साइडेड पॉलीगन क्या है। तो चलिए हम यहाँ से पॉलीगन से ही स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीगन क्या है, पॉलीगन, पॉलीगॉन, पॉली मीन्स आप जानते ही हैं, पॉलीगन मीन्स हैविंग, poly means many, poly means many, and gon means number of sides, having number of, having many number of sides. So polygon is actually what this is actually what, a closed figure. Polygon is actually a closed figure which is made up of line segments. Polygon क्या है, this is actually a closed figure, simple closed figure which is made by number of line segments. तो मिनिमम साइडेड पॉलीगन कौन सा है, मिनिमम साइडेड पॉलीगन, मिनिमम साइडेड पॉलीगन कौन सा है, पॉलीगन जो है वो है ट्राइंगल। मिनिमम साइडेड पॉलीगन कौन सा है, ट्राइंगल। दैट इज मिनिमम साइड का जो पॉलीगन आप ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज ट्राइंगल। इससे कम साइड से आप टू साइड से कोई भी क्लोज्ड फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मीन्स। तो मिनिमम साइड का पॉलीगन, फर्स्ट पॉइंट इज दैट मिनिमम साइड का पॉलीगन कौन सा होता है, दैट इज ट्राइंगल। तो फोर साइड के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, फाइव साइड के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, सिक्स साइड के पॉलीगन को क्या बोलते हैं, सेवन साइड के पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ठीक है। वी हैव टू राइट ऑल दीज नेम्स, सेवन साइड, एट साइड पॉलीगन, नाइन साइड पॉलीगन, टेन साइड पॉलीगन, ठीक है। ये सब हमें चेक करने हैं। तो देखिए फोर साइड के पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। एंड फाइव साइड पॉलीगन इज पेंटागन, पेंटागन, and six side polygon is hexagon, and seven side polygon is hepta or septa, heptagon or septagon, and seven sided polygon is, seven sided polygon is heptagon or septagon, and eight sided polygon is octagon, and nine sided polygon is nonagon, and ten sided polygon is decagon. तो अभी हमें टेन साइडेड पॉलीगन तक ही इनके नेम समझने हैं। क्लास सर नाइन क्लास का करिए, ओके। नाइन क्लास की जो आपकी क्लास है वो स्टार्ट होगी एट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, आपकी जो नाइन क्लास की क्लास है वो स्टार्ट होगी 8:15 पर, ठीक है। 8:15 से 8:20 के बीच, 8:30 तक आपकी क्लास जो है वो नाइन की स्टार्ट होगी फिजिक्स की, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करिए, थोड़ा सा यार इसमें बढ़ाना है, ठीक है। मैं 10-15-20 मिनट में इस क्लास को यहाँ से छोड़ दूंगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं से फाइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं होगी, ऑलरेडी काफ़ी टाइम इसका वेस्ट हो चुका है। नाउ वी हैव फोर साइडेड पॉलीगन, फाइव साइडेड पॉलीगन, सिक्स साइड पॉलीगन, सेवन साइड पॉलीगन, एंड एट साइड पॉलीगन, नाइन साइड एंड टेन साइड। तो थैंक्स सर, नाइन, ओके सर, ओके ओके, ठीक है। तो four sided polygon is quadrilateral, five sided polygon is pentagon, six sided polygon is hexagon, and seven sided polygon is heptagon, eight sided octagon, and nine sided polygon is nonagon, and 10 sided polygon is decagon. So we have different sides polygon having different names. Now how we can find the, अभी हम जो next सीखेंगे, how we can find the number of diagonals, how we can find the number of diagonals, what is the sum of all the interior angles. These things are very important for competitive examination and for your class also, ठीक है, for your class also and for competitive examination also, both, दोनों के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब जो हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करनी है हमें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, फर्स्ट इज, सेकेंड इज sum of all interior angles, sum of all interior angles,
sum of all interior angles, sum of all interior angles and sum of all exterior angles, sum of all interior angles of polygon, interior angles of polygon. And third thing is each regular polygon, angle of each regular polygon, means each regular polygon का each angle कितना होगा वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर समझेंगे वो क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। सपोज दैट वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो जनरली हम क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या है, जनरली वी हैव 4 साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स आर अल्टरनेट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो हम जिस जो अल्टरनेट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म करते हैं दैट इज एक्चुअली डायगोनल। So in this case, for the case of quadrilateral, we can find diagonals by counting. Okay, that is very simple. But if there is a large case, means pentagon, hexagon, and n number of sides का polygon अगर है, then how we can find the number of diagonals? So we can use this. ठीक है, number of diagonals हम कैसे find करेंगे किसी भी polygon में? Number of diagonals in a polygon कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज n माइनस 3/2। n माइनस 3/2 की हेल्प से द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी ऑफ द पॉलीगन। सपोज वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ quadrilateral, so where n is what, n is what, number of sides in a polygon, number of sides, where n क्या है, number of sides। kd पाठक, हेलो, where n is number of sides, n is what, number of sides। so for case of quadrilateral n is equal to 4, आप n की वैल्यू 4 पुट करिए, then 4 minus 3/2, 4 minus 3, 4 into 4 minus 3 that is 1/2, so 2 कैंसिल करेंगे that is equal to 2। तो आप देखिए number of diagonals in case of quadrilateral, number of diagonals in case of quadrilateral we have 2 diagonals। ठीक है, we have 2 number of diagonals, so we can find number of diagonals by this way। so first concept is that how we can find the number of diagonals in any of the given polygon। सबसे पहला ये, तो सिमिलरली आपको फाइंड करना हो, सपोज दैट number of diagonals in a pentagon, number of diagonals in a hexagon, like that, so you can use this formula to find the number of diagonals। so first is how you can find the number of diagonals, in एक एक करके हम समझेंगे। number of diagonals in, now we are going to find the number of diagonals in pentagon, where n is equal to what, in case of pentagon number of diagonals are, where n is equal to 5, so by using the same formula n minus 3/2 we can find the number of diagonals। इंफिनिटी तक बना सकते हैं 8, सर जो है बन सकता है, जो ही बन सकता है, यस, ओनली in case of quadrilateral only 2 diagonals are possible for quadrilaterals। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए जितना यहाँ पर देखिए हम फाइंड कर रहे हैं, n is what, n is for the case of pentagon n is 5 minus 3/2 that is 5 into 2/2, so 2 से 2 cancel हो जाएगा, that is equal to 5। ठीक है, means in case of pentagon number of diagonals are 5, in case of pentagon number of diagonals are 5, पेंटागन के केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी, 5 होंगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। सिमिलरली यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन केस ऑफ हेक्सागन आल्सो। इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन, put n is equal to 6, then n minus 3/2, n is what, 6 minus 3/2, so 6 into 3/2, so 3 से इसको कैंसिल करेंगे, that is equal to 9, means number of diagonals in case of hexagon, means number of sides are 6, in case of hexagon
Number of diagonals are 9. So similarly, we can find the number of diagonals in case of 15 number of sides, 16 number of sides, or n number of sides. We can find the number of diagonals in any of the given polygon. तो आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट जो हम आगे स्टार्ट करेंगे वो है हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन. So second thing is that sum of all interior angles of a polygon. Sum of all interior angles of a polygon. Interior angles of a polygon. Sum of all interior angles of a polygon. Sum of all angles of all interior angles of a polygon कैसे find करेंगे? So we have also a formula like that. We can use n minus, that is what? N minus, we can use this to find the number of, this is n minus 2 into 180. We can find sum of all interior angles of a polygon by using n minus 2 into 180. And where n is what? N is the number of sides. Suppose we have to find the number of sum of all angles of a triangle. Sum of all the minimum sided polygon is triangle. So n is equal to 3. Put n is equal to 3. 3 minus 2 into 180. That is equal to 1 into 180. That is equal to 180. And we know that अब जानते हैं कि sum of all the angles was this really question करा दीजिए कुछ. Okay. After this concept मैं कुछ question पर ही आऊँगा. इस कॉन्सेप्ट के बाद हम एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स पर आएंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू विद द क्वेश्चंस करा दीजिए. व्हाट जस्ट लीजिए. ओके ठीक है, आई एम ट्राइंग. सो इन केस ऑफ quadrilateral, in case of any polygon we can use this to find the sum of all angles of a polygon, sum of all interior angles of a polygon. So similarly, if we want to find the number of sum of all angles of a pentagon, पेंटागन के सभी एंगल्स का सम हमें फाइंड करना है इंटीरियर, देन क्या करेंगे? n माइनस 2 इंटू 180 यूज करेंगे. दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज 5 माइनस 5 minus 2 into 180, that is 3 into 180. This is equal to 540. Means sum of all angles of a pentagon is 540. So this is the sum of all interior angles of a pentagon. Similarly, you can find the sum of all interior angles of a hexagon also. Hexagon, heptagon and all these. Now we have to find the each interior angle of any polygon. So just if we know the sum of all the angles of a pentagon, then we can just divide it by the number of sides. By dividing the number of sides, we can find the value of each interior angle. एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, we can find by that. तो चलिए देखते हैं. After this, next is that each interior angle of a regular polygon. Each interior angle of a regular polygon के केस में क्या करेंगे? We know that sum of all angle is n. Sum of all angle is n minus 2 into 180. This is the sum of all angles. And suppose we know that n is the number of sides. So just to divide, you have to find the value of each angle. So just to divide by the total number of sides. So each angle is equal to divided by n. N minus 2 into 180 divided by n. This is each angle of any polygon. Each interior angle of any polygon. By this you can find. Suppose you have to find the
इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। देन n इज इक्वल टू व्हाट 5, पुट n minus 2 into 180 by n, that is equal to 5 minus 2 into 180 divided by 5, then 3 into 180 divided by 5, 5 से कट करेंगे, that is equal to 5 3 जा and 5 6 जा, so that is equal to 108. So each angle, each interior angle of a pentagon is 108. एक हर एक इंटीरियर एंगल। सर आज की क्वालिटी बढ़िया है वीडियो की, ओके क्वालिटी वीडियो की बढ़िया नहीं है, क्वालिटी आप अपने यूट्यूब से जाकर के वहां पर क्वालिटी इंप्रूव करिए, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नाउ each interior angle of regular polygon is we can find by sum of all the angles divided by number of sides. So by using this we can find the number of, we can find the each value of each interior angle. Similarly, we can find the value of each exterior angle of a polygon. Each exterior angle of a polygon, first we know that what is the sum of each all exterior angles. Sum of all exterior angle, sum of all exterior angle of a polygon. Sum of all exterior angle of any polygon. ठीक है, always that is equal to 360. ठीक है, interior angles are different for different number of sides, but exterior angle is always equal to 360. Either number of sides are 3 4 5 6 7 8 9 or any number of sides are there. ध्यान रखिए कि exterior angle का जो sum होगा always 360. Suppose we have n number of sides in any polygon, then each exterior angle of regular polygon, each exterior angle of regular polygon is equal to sum of all, that is 360 divided by n. तो इससे आप जो है 2 3 का 8 वाला, सर 2 3 2 3.2 का 8 वाला, ओके आफ्टर दिस वी आर गोइंग थ्रू द एक्सरसाइज आल्सो। जितने भी आपके मैथ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं अभी को देखूंगा, ठीक है। तो बाय दिस वी कैन फाइंड by this we can find each exterior angle of any polygon. Now we are going to do some questions regarding this. अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। जैसे एक्सरसाइज 3.2, व्हाट अबाउट 3.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चंस क्या हैं, इजली आप ये कर पाएंगे, इनको हम प्रैक्टिस में कर लेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स। So each interior angle of, find the measure of each interior angle. Each interior angle of regular polygon. Regular polygon is equal to what? N minus 2 into 180 degree
डिवाइडेड बाई n, जो आप पढ़ चुके हैं अभी। So n is what for n first case n is equal to 4. N is equal to 4. Put the value of n minus 4 minus 2 into 180 divided by 4. तो कितना हो जाएगा 2 into 180 डिवाइडेड बाई 4, कट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 90। मीन्स ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 90 डिग्री। और रेगुलर पॉलीगन में आपके कौन से आएगा, स्क्वायर आएगा। रेगुलर पॉलीगन इज स्क्वायर, तो ईच इंटीरियर एंगल इज of a regular polygon is 90 degree. So second part is next is having 12 number of sides. Having 12 number, n is equal to 12. So if n is equal to 12 is there, then again you can find this by putting n minus 2 into 180 divided by n. N is what, 12. 12 minus 2 into 180 divided by 12. So we have 10 into 180 divided by 12. Solve it. 12 ones are 12, 12 fives are 60. So each angle will be 150 degree. ठीक है, means एक regular polygon whose each side is a regular polygon whose side number of sides are 12. Number of sides अगर 12 है, then each interior angle will be equal to 150. I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी। Exercise 2.3 का find the number of sides. Now we have to find the number of sides in each regular polygon. Now we have to find the number of sides in a regular polygon. Question number second is that number of sides of a regular polygon whose each exterior angle is. So we know that about each exterior angle. Exterior angle is that exterior angle. Each exterior angle is equal to 360 divided by. We know that sum of all the exterior angle is always equal to 360, and we have to find each exterior angle, so we have to divide by n number of it. Hey everyone, hacker कौन है? वॉच सर, स्पीड में मत पढ़ाइए, ज़्यादा स्पीड हो रही है क्या? देखिए स्पीड में इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है अपने अकॉर्डिंगली समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा स्पीड हो रही है। देखिए मल्टीपल टाइम्स आप इसको देख सकते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आई एम ट्राइंग टू डू टू राइट क्वेश्चन ऑल्सो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सर स्पीड में मत पढ़ाइए, ठीक है, ट्राई करता हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 by n, that is equal to, for the first case, number of each exterior angle, and each exterior angle is given. Each exterior angle is given for first case, that is 45 degree. So 45 degree is given, 360 degree by n, means you have to find the number of sides. So n is equal to 360 divided by each angle. Solve it. This is 360 degree, कट करेंगे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 1 जा, then 5 8 जा, n is equal to what, 8. Means number of sides कितनी है इस केस के लिए, whose each exterior angle is 45 degree, that is 8 number of sides, that is this is octagon. Sir, picture quality is bad. Is it really true? Picture quality is not bad. आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करिए, that is the problem. Quality is everything is clear. Okay, and next onward हम क्वेश्चन के साथ में ही आपके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे।
हाय सर, 3 Mbps। देन वाई, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि क्वालिटी क्या सभी के लिए प्रॉब्लम कर रही है। आई थिंक क्वालिटी इज नॉट बैड, कुछ तो ठीक है। ऑन माई स्क्रीन एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, वी हैव टू stop this session now। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। सर इज लाइक ब्लर, वेरी नाइस। प्रॉब्लम कि जिसको क्वालिटी की प्रॉब्लम हो रही है वो अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करें। नॉट गुड फॉर मी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट क्लास के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।